वडोदरा में महाशिवरात्रि पर सिद्धनाथ महादेव मंदिर में अखंड महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया है। वडोदरा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नवनाथ महादेव मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धनाथ महादेव मंदिर में अखंड महामृत्युंजय जाप की आहुति और लघुरुद्र हवन का आयोजन किया जाएगा। नवनाथ महादेव ए वडोदराना रक्षक देव छे। 2014 नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति द्वारा नवनाथ महादेवनी कावड़ यात्रा 37 किलोमीटर निकाळवामां आवे छे अने शिवरात्रि पर कई ने कई कार्यक्रम अमे करता आया छे। आ वर्षे ज्यारे विचार आव्यो के अमे ज्यारे काशी गया अने साथे साथे महाकुंभमां बधाए दर्शन कर्या पछी बधाने एक विचार आव्यो के भाई काशी में जो अखंड धोणो होय तो वडोदरा में केम नहीं, कारण के वडोदरा काशी पछी सौथी वधारे देवालयो शिवालयो वडोदरा शहर में छे। એટલે વડોદરા આમ જોવા જઈએ તો વિશ્વામિત્ર ઋષિના વખતની છોટી કાશી તરીકે ઓળખાય, એટલે વડોદરામાં પણ આ થવું જોઈએ। એટલે વિચાર કરીને અમે શિવ યજન શિવના અનુસંધાનમાં એક યજ્ઞકુંડ શિવ જ્યોત અખંડ મહામૃત્યુંજયના જાપથી પ્રગટાવવાનું નક્કી કર્યું અને વિચાર કર્યો અને પછી સિદ્ધનાથને શરૂઆત કરવાની, કારણ કે સિદ્ધનાથ મહાદેવ એ છે કે દરેક આત્માને જીવને શિવ તરફ જવું હોય तो पहला पोतानी आत्मा ने जीवन में सिद्ध करवू पड़े, एटले सिद्धनाथ महादेव। एटले अमे शरूआत सिद्धनाथ महादेव थी करी रह्या छे अने दरेक लोकोने अमारी विनंती छे के रोज अहींया गमे त्यारे 24 कलाकमां कोईपण व्यक्ति गमे त्यारे आवीने पोते जाते बेसीने घरेथी लईने आवे अथवा तो अहींया समिधोनी व्यवस्था अहींया हवन सामग्रीनी व्यवस्था राखीशुं। दरेक जण आवीने पोते अहींया आहुति आपी शके। मात्र ने मात्र महामृत्युंजयना ज जाप एमां होमवाना અને એ જ સંકલ્પ સાથે શિવ જ્યોત શિવ યજન અને આ ધોળો અમે પ્રતિષ્ઠિત કરીશું। તો એમાં બધા જ લોકો મહામૃત્યુંજયના જાપ અહીંયા હોમી શકશે, જેનાથી દરેક વ્યક્તિના વડોદરા શહેર ગુજરાતના લોકો અને ભારતના તમામ લોકોના જીવનમાંથી આદિ વ્યાધિ બીમારીઓ દૂર થાય।